Which brings me to a rapid fire kind of summary questions जिसके usually लोगों के दिमाग में ये होता है. तो मैं कुछ rapid fire questions पूछती हूँ और आप दोनों yes no जवाब दे सकते हैं. Yes. तो पहला सवाल, children who are breastfed have stronger immunity, yes or no? Yes. Yes. Okay, unanimous है. Children who are formula fed tend to be overweight, No. yes or no? No. Okay. Obese mothers have issues with breastfeeding. No. No. Scientific जवाब दूँ? Yes. Yes. Scientifically, yes, people who have obesity do tend to face some problem towards initiation and continuation of the breastfeeding because hormones and all are related, but not all of them. But ये एक scientifically proven है. The next one, if you have a C-section, you will have problems with breastfeeding. Yes or no? No. If you have a premature baby, you might have problem with breastfeeding. Yes. Good. It is easier to initiate and continue breastfeeding for the second child. Yes, or no? Very easy. I don't know, बस you as a mother you are better prepared. बच्चा का तो केस अलग हो सकता है, डिलीवरी अलग हो सकती है. Okay, the next one. You need to feed water separately to an exclusive breastfed child. True or false? Till 6 months, no. No. Yes. Till 6 months. No. You can smoke or have alcohol without impacting breastfeeding. Yes or no? No. You should not breastfeed if the mother is sick. Like if you yourself are sick, you should not breastfeed. Yes. Yes or no? Yes. No. You can You feed can your child feed your child even if you are sick. sick. तो सिर्फ HIV पॉजिटिव Yes. एंड सम वायरस स्क्रीनिंग वो मदर्स जो होती हैं वो ब्रेस्टफीड नहीं कराना चाहिए But I उनको. heard this like if a mother is suffering from fever because she take medicines तो उतना देर नहीं. Maximum नहीं medicines दे are सकते. breastfeeding friendly, or you can ask for those. Yeah. Plus But I the think you need to infection. consult a doctor before Yes. taking any तो medicine. सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस व्हिच विल हैव इंटरैक्शंस विद योर ब्रेस्ट मिल्क. तो Yes. सबसे पहले कुछ भी मेडिकेशन लेने से पहले आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है. वो It's a ओके very कहे important point I believe. It's very Yes. important point. और वो ओके कहे फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस Yes. डोंट इंटरैक्ट बट देयर आर मेनी मेडिकेशंस दैट इंटरैक्ट. अब ये लिस्ट आपको तो पता नहीं है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको पूछ के ही आप लीजिए. Brings me to the next question. You should not breastfeed a baby if the baby is unwell. True or false? False. False. Yes, of course. You should not breastfeed a baby if you have loose motions. No. False. No. You should not breastfeed a baby if the baby has loose motions. और जरूरी हो जाता है. Exactly. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो घर पे जो बुजुर्ग होते हैं वो भी कि नहीं बच्चे को दूध मत दो उसका पेट खराब है. ये तो बहुत ही कॉमन सा एक होता ही रहता है.